Change of variable. Application of chain rule. The function f of uv differentiable function of u and v when u and v are again differentiable function of independent variable x and y. So u is the function of x and function of y, and v is the function of x and y. So del f del x equals to del f del u del x plus del f del v into del v del x, and del f del y equals to del f del u del y plus del f del v into del v del y. This is the chain rule form. So example 1, if a Cartesian coordinate x y of a point in r cos r square is changed to polar coordinate r theta, where r and theta are functions of a single variable t. Then prove that d2x dt square equals to d2r dt square minus r d theta dt square cos theta minus 1 by r d dt of r square d theta dt sin theta. So this is प्रूव करना है इसको. एंड सेकेंड क्या है, d2y dt स्क्वायर इक्वल्स टू d2r dt स्क्वायर माइनस r d theta dt তার হোল স্কোয়ার sin theta plus 1 by r d dt of r square d theta dt cos theta. So prove this. We have x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Then dx
dt equals to, apply chain rule, del x del r dt del t plus del x del theta dt. So this is equals to cos theta dx dr इस इसको r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा मिलेगा, cos थीटा डेल r डेल t प्लस अगेन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल एक्स डेल थीटा इक्वल्स टू r माइनस r साइन थीटा. So this is equals to minus r sin theta into del theta del t. So this is equals to cos theta del r del t minus r sin theta del t. This is equation number 1. Again differentiating del y del t and apply chain rule equals to del y del r into del r del t plus del y del theta del t. So this is equals to इसको y को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल y डेल r इक्वल्स टू साइन थीटा मिलेगा, एंड थीटा के अगेंस्ट रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल y डेल थीटा इक्वल्स टू r cos थीटा मिलेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा डेल r डेल t प्लस r cos थीटा del theta del t. So this is equals to, we write sin theta dr dt plus r cos theta d theta dt. So this is equation number 2. From equation number 1 differentiated with respect to t, then we get from 1 differentiating with respect if we differentiating equation number 1 with respect to t, so we get dx dt square equals to cos theta d2r dt square minus sin theta del t dr dt minus dr dt sin theta d theta dt plus r cos theta d theta dt তার হোল স্কোয়ার প্লাস r sin theta d2 theta dt square. So this is equals to d2r dt square minus r d theta dt তার হোল স্কোয়ার into cos theta minus 2 dr dt
into d theta dt plus r d2 theta dt square sin theta. Then this is equals to d2r dt square minus r d theta dt তার whole square cos theta, and common 1 by r, then we get this is the form of d dt of r square d theta, and this is equals to 2r dr dt d theta dt plus r square d2 theta dt square sin theta, and this is the form of cos theta minus 1 by r, and this is the form of d dt of r square d theta dt. r square d theta dt को डी टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज, सो नंबर 1 is proved, hence 1 is proved. Again from 2 differentiating with respect to t, then we get d2y this is equals to 2, and then इक्वेशन नंबर 2 को फिर से टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा. From 2 differentiating with respect to t, then we get d2y dt square equals to sin theta d2r dt square plus cos theta d theta dr into dr dt plus dr dt cos theta d theta dt minus r sin theta d theta dt তার হোল স্কোয়ার plus r cos theta d2 theta dt square. So then we get d2r dt square minus r d theta d2 তার whole square sin theta, and this is sin theta, then common sin theta, then we get plus 2 dr dt into d theta dt plus r d2 theta dt square into cos theta, then we get this is equals to d2r dt square minus r d theta dt তার whole square into sin theta
plus then we common 1 by r, then we get 2r dr dt d theta dt plus r square d2 theta dt square into cos theta. This is equals to d2r dt square minus r d theta dt তার whole square into sin theta plus 1 by r, and this is the form of d dt of r square d theta dt into cos theta. So hence proved to so d2y dt square equals to d2r dt square minus r d theta dt তার whole square into sin theta plus 1 by r ddt of r square d theta dt into cos theta. So d2y dt square equals to d2r dt square minus r d theta dt whole square into sin theta plus 1 by r dt of r square d theta dt cos theta. Hence proved.